हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी चल पड़ा हूँ मैं लेक टिकापो के पास से, लीविंग द अकोमोडेशन नाउ टू क्राइस्टचर्च। अभी चलेंगे थोड़ी देर में। एक मॉर्निंग व्यू देखो यहाँ पे। तो अभी निकलेंगे क्राइस्टचर्च की तरफ। रास्ते में अगर नाइस व्यू आए तो रुकेंगे, नहीं तो सीधे क्राइस्टचर्च। पहले तेल भी फिल करना है कार में। सो अभी निकलेंगे यहाँ से। लेट्स गो फ्रॉम हियर। हाँ तो गाइस फाइनली क्राइस्टचर्च पहुँच गया हूँ। तो अभी यहाँ पे रुकूंगा और थोड़े दिन यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सिटी। ये रही अकोमोडेशन। अभी जाऊँगा इनसाइड। तो गाइस अकोमोडेशन के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे रूम्स हैं अलग अलग, लेकिन रूम्स के अंदर डॉर्मिटरीज है, जैसे छोटे छोटे बेड जैसे बनाए हैं, लेकिन उनको बोलते हैं पोर्ट्स, जैसे कैप्सूल टाइप। से सारा बंद होता है, लेकिन आपको अलग से मिलता है एक पोर्शन। तो अभी चलेंगे, देखते हैं। तो देख लिया आपने, बाहर देखो। हाँ तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ क्राइस्टचर्च। यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है इस मार्केट में। कारें और लोग देख के कुछ अच्छा लग रहा है, बिकॉज थ्रू आउट न्यूजीलैंड ट्रैवल करके आया हूँ। बहुत ही क्वाइट थे रास्ते। इसके पास ही साथ ही में एयरपोर्ट है। अभी चलते हैं बर्गर फ्यूल, ये सामने है। थोड़ी सी भूख लग रही है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन चलो चिप्स लेते हैं यहाँ से। तो गाइस घूमते घुमाते पहुंच गया हूं मैं क्राइस्टचर्च सिटी।
यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स है और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है अभी बन रही हैं दोबारा से। काफ़ी साल पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो है वो ढह गई थी। अभी दोबारा से रीबिल्डिंग काम चल रहा है, बहुत सारा रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है क्राइस्टचर्च में। देखिए ओल्ड बिल्डिंग। अभी यहाँ से एक ट्रैम चलती है जो पूरे सिटी का टूर कराती है, तो अभी देखते हैं अगर अभी अवेलेबल होगी तो ट्रैम पे करते हैं राइड और सिटी टूर करते हैं क्राइस्टचर्च। ये ट्रैक देखो, यहाँ से बुकिंग होगी। ओके, तो अभी मैंने $35 की टिकट बुक की है ट्रैम की। यहाँ पीछे बुकिंग सेंटर है, तो यहाँ पे आएगी ट्रैम। ये रहा ट्रैम स्टॉप, अभी वेट करते हैं। सारा कुछ आप यहीं से बुक कर सकते हैं, गंडोला राइड, पंटिंग और ट्रैम और भी सारे एडवेंचर जो कि अब क्राइस्टचर्च में अट्रैक्शंस हैं। अभी आ गई है ट्रैम, तो चलेंगे सिटी टूर पे। क्राइस्टचर्च सिटी टूर इन ट्रैम। इससे पहले मैंने ऑकलैंड में भी एक ट्रैम के ऊपर ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में ट्रैम राइड देते हैं। ये पूरे सिटी टूर करवाते हैं ट्रैम पे। Through the Gregor Cardinal to the right, across to the Isaac Theatre Royal. Wonderful Edwardian style live theatre. Grotto Grant. Beautiful building. There's usually something on there regularly, everything from ballet recitals through to rock. Head up the top level, open viewing bell. Especially the damaged Cathedral Church. On the left there is the Citizens' War Memorial that had to be removed from within the grounds of the cathedral. Make way eventually for a visitor centre. February Princess Anne arrived here to officially re-bless it. And we were lucky enough to be able to hold first dawn service on Anzac Day there. Right over to the left there, that's the original post office custom centre. Saved from being demolished by being crowd-funded. You could buy a share in that. And we look forward to some new. So we're going to go left here, along the promenade. Building, got an amazing makeover there. If you look up above the door, the lion and the unicorn, coat of arms, and it's got a rooftop restaurant and bar up there called Mr. Brightside. It's open at the moment. And now that is stop number 3, Mill Island. It was a 3-storey working flower. There, great atmosphere, and all these other restaurants and bars, all different themes, all different food choices. Right, you can head down the and over to the right, the Bridge of Remembrance, memorial to the and a new path to the left of that flagpole, a couple of minutes walk. And
and basically all brand new. Only 3 buildings were able to remain with some repair. Strong, safe new building. A separate children's bookshop there as well. Now, on the left there, pharmacy, post shop. And on the right there, it's the oldest department store in the country, still down. And that is stop number 5 at Colombo Street. Above Colombo connects Valentine's with a brand new area called The Crossing. The developer was sympathetic enough to say it's a complete facade, especially the copper veranda and the fancy windows, and also the frontage up above Country Road. Tram tracks on one of the corners there. Unfortunately, a number of weeks ago we had a major derailment. But well worth a wander up there. तो ये था यहाँ का लास्ट स्टॉप। अभी चलेंगे वापस यहाँ से बैक टू वहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था। Yard Centre, Art Gallery. And there's gaps between the major buildings. Now for a bit of wriggle room in case. And a new building code issued after the earthquakes stated no new building to be higher than 28 metres in the inner city. That's 5 or 6 stories. Now that's bringing us into stop 9. To the left, the cone-shaped structure, that's called the chalice. Always a gift to the city for the millennium year 2000 to celebrate 150 years of European settlement here. Over to the left, damaged cathedral. Last 2 years they've been involved in what they call stabilising that building, making it safe enough to enter before they start the full repair. And they're about ready to do that now, and they're optimistic they can have that damaged church fully repaired by 2027. Wonderful murals. You'll see a lot of murals and artwork as you move around our city. We're still listed in the lonely We're going up onto the bridge, which is stop number. Stop number 10. The very first wooden footbridge was built at this point. There's now 41 bridges span. Starts its flow being spring-fed out by the international airport. Head down. That's our art gallery. Now the art gallery is open till 5 p.m. free entry. It's on the right hand side. To be in after the earthquakes.
2,184 panes of glass along the frontage, and luckily only one pane of glass was cracked in the earthquakes. On the left there, City Council officers representing the graded rivers of our region. The autumn leaves clog the system frequently. So the art gallery to the right. Fiddlesticks restaurant to the left. And we're coming in to stop number 12 at the Art Centre. Late in the day to explore around here. Right, wonderful little craft shop set up in shipping containers. To the left, the Custard Square bookshop. Books $5. Left to complete, and luckily we had stonemasons and engineers from all over the world here leading up to the pandemic. Now there's a lot to see through this end as well. A couple of boutique movie theatres, award-winning wine bar, a cellar door. And the Museum of Natural History directly across the road. It's now closed for 5 years. Well, they do some extensive alterations and renovations there. You can always head into the Rabbitscard House Museum Gallery and Home on the right. Over to the left there, some of still in use. Christ College, prestigious private boys secondary school. Have a look through the gates. Those buildings have all seen heavy earthquake strengthening back in 1976, 77 uniform, black and white. Codes in this city. First blacksmith arrived here from Inverness in Scotland, hence its name. John Anderson, he was a 16 Quake City museum set up by the museum, and it's called the Earthquake Story. Documents all the earthquakes we had and up in Kaikoura and what's happened since. Council chambers, before we had central government, each province. And they're budgeting on $200 million. Another photo to the right there. Those buildings were designed along the lines of the English Houses of Parliament and Westminster. Over to the right is our convention centre, covering 2 full city blocks. Victoria Square, solid bronze statue of Queen Victoria there. And over the far side is the town hall. Thank you.
the fence here, that was the 22-storey office block. Over the intersection to the left, we've got Children's and Family Playground. Margaret Marty was a famous local children's story author, what a character, and so that's stop number 18, New Regent Street. As you can see, a great place to stop, have something to eat or drink. Story. Opened in 1930. Mixed buildings and original colours. That is stop number 1. Booking office and tram shop to the right. देखा गाइज, ये था सिटी टूर जो ये देते हैं ट्रैम के थ्रू। तो पूरे सिटी का टूर देते हैं और दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है और कैसे कैसे क्या क्या बिल्डिंग्स के नाम है, कहाँ कहाँ से जो रास्ते जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कितनी पुरानी हिस्ट्री है, सभी कुछ बताते हैं उसके बारे में। काफ़ी मज़ेदार था ट्रैम टूर, पूरे सिटी का एक टूर हो गया ट्रैम से। पुरानी हिस्ट्री भी पता लगी कुछ न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च के बारे में। अभी चलते हैं वापस। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस।